Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Breaking Views on NDTV. I am Ankit Tyagi. Before we go to our top focus this evening, there is some breaking news at this moment which is coming in. So let's quickly go across to that. Important, in fact, this news which will have some political ramifications as well. Enforcement Directorate, ladies and gentlemen, have moved the Delhi High Court challenging the anticipatory bail granted to Robert Vadra in the money laundering case. The ED has alleged that Vadra violated the conditions imposed by the court while granting anticipatory bail. Now, the Delhi High Court has sought a response and the case has been adjourned for September. But this is very, very important to move at this moment. Let me go across to my colleague Arvind, who is joining us with more details on this. Arvind, any clue what conditions did Mr. Vadra not, in fact, adhere to that has prompted this move of the Enforcement Directorate? Ankit, Robert Vadra is currently being investigated by the Enforcement Directorate in connection with the money laundering investigation linked to alleged arms dealer Sanjay Bhandari. In connection with the said case, Robert Vadra has already secured anticipatory bail from the CBI court or the special court in Delhi. So this particular anticipatory bail was granted to Robert Vadra in connection with this money laundering investigation in April 2019. So challenging the anticipatory bail that has been granted to Robert Vadra, Enforcement Directorate already challenged this particular order in Delhi High Court, and that particular matter is currently being heard by Delhi High Court. When the matter was taken up for hearing today, the Enforcement Directorate said that they are filing additional affidavit or more documents to show that Robert Vadra has been violating the conditions that have been imposed by the special court while granting anticipatory bail, and that's where the Enforcement Directorate sought for custodial interrogation of Robert Vadra, saying that his anticipatory bail that has been granted by the CBI court or the special court in 2019 should be set aside. So hearing this particular argument of Enforcement Directorate, the court has granted time for 2 weeks for the Enforcement Directorate to file additional affidavit or documents with whatever the agency has to file, and the matter has been adjourned for September. In the meantime, the court has already also asked Robert Vadra to respond to the allegation of the Enforcement Directorate that he has allegedly violated the conditions imposed by the court while granting anticipatory bail. Arvind, thank you so much for all those details. So trouble, in fact, for Mr. Vadra if he's unable to explain the allegations which the ED has made regarding his anticipatory bail. All right, viewers, now moving forward. Heavy rains have battered the hill state of Himachal Pradesh this monsoon. You've been hearing about it. We have reported extensively on what had happened at least 2 to 3 weeks back. But the impact has been severe. And once again, since Sunday, record rainfall has triggered landslides, cloudbursts, and have claimed the lives of more than 56 people across the state. A total of 170 incidents of cloudburst have been reported in the state this monsoon season, and about 9,600 houses have been damaged. Roads and other infrastructure have been severely hit. I want to start the show this evening with some videos from Himachal Pradesh which tell the story of the trail of destruction the state is facing. Some of these, I might warn you, may be disturbing to watch, but imagine how people's lives have been completely devastated by nature's fury in just a few seconds. Let's just take a look at few of these visuals, in fact, from Himachal Pradesh. I want to start with Shimla, the capital city, which has borne the maximum burn this time as far as the last 24 hours are concerned. These visuals that you see are of a rescue operation after massive landslides in Shimla. In fact, Shimla today also saw a lot of destruction. These are rescue workers on the job trying to, in fact, rescue people, those who are still feared to be under the debris. Now, let's just shift focus to some more pictures, again from Shimla this time. And these are, ladies and gentlemen, horrific. I want to, in fact, put the sound also on this, and you will hear people in desperation watching their houses being completely washed off. Let's just put some sound on this and just get a sense of the gravity.
houses collapsing like a pack of cards there because of those landslides. Now, the other visuals which we are showing you at this moment are from the evacuation or the rescue which is taking place in the Kangra district. Choppers of the Indian Air Force have been pressed in action to try and save pilgrims, those who were stranded in many places. Now, ladies and gentlemen, more than 800 people have been evacuated from Kangra near the Pong Dam and using the helicopters because many of the roads have completely been washed off. And that's why there is, in many places, are completely cut off from the mainland. Now, meanwhile, the heritage Shimla Kalka railway track has also suffered a lot of damage. These are the visuals that you are seeing of the heritage railway track, which you can see how the land, the mud, everything under the tracks have been completely washed off, and this is going to take a lot of time to be repaired. Meanwhile, NDRF teams in Kangra and Shimla are working overtime to try and rescue people. Remember, the death toll is increasing. There are still at some places where under the debris of the landslides, people are at this moment, in fact, feared to be under the debris as well. Air Force, Army and ITBP have all been pressed in Shimla in the rescue efforts. These are some visuals of how the forces are rescuing people from the most worst impacted areas, taking them to safety. Look at this, a woman being in fact rescued by this through the chopper because the rooftop, because her house is in a very precarious situation, and there are cloud bursts which have induced flash floods as well. 61 people, ladies and gentlemen, have killed so far all across the state. 10,000 crore is what the damage which is pegged across the state of Himachal Pradesh. These pictures, ladies and gentlemen, tell you the story of the devastation, but the impact on people's life is severe. We bring you the story of those who have suffered the most. 3 generations of a family wiped off in just one stroke when they went to a temple to offer prayers to the deity. The biggest blow to a single family. 3 generations wiped out in a matter of seconds in the Summer Hill area of Shimla in Himachal Pradesh. Teams of Himachal Police, NDRF, SDRF and the Indian Army are clearing debris, searching for survivors and dead bodies. जो प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हैवी मशीनरी है। सर्च कंप्लीट होने का पूरी तरह से पुख्ता जानकारी देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो नीचे डेड बॉडीज जहाँ तक गई हैं उसका फैलाव लगभग 2 किलोमीटर तक का है क्योंकि नीचे वाले इलाके में मशीनरी यूज नहीं हो सकती, मैनुअल ही काम करना पड़ेगा। The remaining family and neighbors are unable to come to terms with their grief, still hoping against hope. मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। जितनी जल्दी हो सकता हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। मेरे को ला रही थी वो साथ तो जाके जी मेरे को बुखार हो गया, मैं नहीं आया। आज मेरी भाभी 4 लोगों का दाह संस्कार हमने कर दिया था कल जाकर। इनकी 3 जनरेशन खत्म हो गई जी। There are many such families across Himachal Pradesh today. They have lost children, parents, siblings. More have lost livelihoods, homes and farms. As the government struggles to reach rescue and relief to everyone, Himachal is a state in mourning, covered in gloom. NDTV Bureau Report.
So how is the state coping up with what is going on as far as these rain-induced flash floods and landslides are concerned? What is the administration doing about it? I'm now being joined by the Chief Minister of Himachal Pradesh, Mr. Sukhu, who was in fact on an aerial survey today. Mr. Chief Minister, thank you so much for speaking to us here on NDTV. I want to start by asking you, sir, आपने एक एरियल सर्वे आज किया, क्या हालात हैं आपके राज्य के? स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। अभी जो मैं असेसमेंट करके आया हूं वो बारिश से ज्यादा जो हमारे बीवीएमबी का पोंग डैम का जो पानी छूटा है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमने हेलीकॉप्टर से, मोटर बोट से 1100 लोगों को निकाल लिया है और कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, पर फसल्स का, घरों का, लाइफ स्टॉक्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो बारिश में जब डैम हमारे लबालब भर जाते हैं तो पानी खोला जाता है और पानी खोलने के बाद नदी का जो बहाव है वो अपने कोर्स को चेंज कर लेता है, जिससे अभी हमारे कांगड़ा वैली के 2 क्षेत्र ऐसे जो पंजाब के सटे पठानकोट से लगे हुए हमारे विधानसभा क्षेत्र भी है, इंदौर और फतेहपुर, वहां बहुत नुकसान पानी छोड़ने से हुआ है। इसका मेन कारण बीबीएमबी के जो गेट्स खुले उससे हुआ है। जी सर, मैं शिमला के बारे में खास तौर से बात करना चाहता हूं। शिमला में सबसे ज्यादा अभी फिलहाल नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा मौतें भी शिमला से ही हुई हैं। आज भी वहां पर लैंडस्लाइड हुए, घर पूरे के पूरे गिर गए। शिमला पे इतना असर क्यों पड़ा है? क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से कई सालों से जो बर्डन शिमला के ऊपर पड़ा है, बेजा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, उसकी वजह से शिमला को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, 14 अगस्त की रात को, 14 अगस्त वाले दिन सुबह से एक दिन में हिमाचल प्रदेश में 51 जानों को हमने खो दिया। ये किसी भी त्रासदी में बरसात के समय की सबसे ज्यादा इतिहास में मौतें हैं। मैंने खुद जाकर महसूस किया तो एक हमारी शिप बॉडी है और सावन मास का अंतिम सोमवार था, काफी लोग वहां गए हुए थे शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। उतने में पेड़ों से स्लैश आया और तकरीबन काफी ज्यादा नुकसान जिंदगियों का वहां हुआ है और अभी भी हमारा रेस्क्यू वर्क चला हुआ है। और शिमला के साथ एचपी यूनिवर्सिटी के निचली साइड का एरिया है, तो तकरीबन काफी लोग अभी हमने निकाल लिए, शवों को हमने निकाल लिया, काफी लोग अभी दबे हुए हैं। साथ ही और शिमला शहर के एक निचली क्षेत्र में जहाँ लैंडस्लाइड हुआ उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो एक दिन में पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी बरसात के समय मेरे ख्याल में ये सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा है। दूसरा, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं ज्यादा बढ़ी है। कुछ कारण मानवीय होते हैं और कुछ कारण प्राकृतिक के होते हैं। और मानवीय कारणों में हम ड्रेनेज जो है उसको खुला छोड़ देते हैं कि अपने घर का पानी तो निकल जाए, दूसरे के घर को नुकसान होता है तो हम देखते नहीं है। इस दृष्टि से भी हमें ये सोचना पड़ेगा। और जो नाले हैं, इन नालों में जो हम घुस गए हैं, नाले हम में नहीं घुसे हैं, नाले में हम घुस गए हैं, तो उसको भी हम जब उस नाले चौक हो जाते हैं तो पानी तो निकलने के लिए कहीं से भी रास्ता निकाल लेता है और उसके कारण जो हमारा पहाड़ है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और कभी वो जहां से रास्ता मिलता है तो इस प्रकार के नुकसान होते हैं। तीसरी, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात है। हुआ ये कि जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि आती गई, आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए और मानव के स्वभाव में ये होता है कि वो जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, 1 लेंटर, 2 लेंटर, 3 लेंटर, तो 1 लेंटर और ज्यादा डाल दिया, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती, सॉइल की हार्ड स्ट्रेटा इतना ज्यादा नहीं होता और नीचे जब वो प्लिंथ लगाते हैं तो उतना ज्यादा मजबूती से नहीं लगाते कि इतनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी करेंगे। तो इस ढंग से जब उनके नीचे से मिट्टी खिसकती है और तो वो बिल्डिंग पूरी की पूरी बह जाती है। और जब पेड़ के साथ मिट्टी आती है तो एक पेड़ नहीं आता अपने साथ लेकर, वो 3-4 पेड़ लेकर आता और उसके सामने कोई भी बिल्डिंग होगी टूट जाएगी। मुख्य कारण मुझे ये लगे हैं। पर सर जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या
जी, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो, खासतौर से शिमला में बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए, कहां पे बनाए जाए, इसको लेकर कुछ नए कायदे कानून, कुछ नए नॉर्म्स को लाने की आवश्यकता है? नहीं, हमने कल कह दिया नए नियम तो बनाने हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बहुत जरूरत है कि क्या हमें अगर हमने 8 स्टोरी बिल्डिंग बनानी तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करनी है, 2 स्टोरी बनानी तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करनी है, उस पर मेरा ध्यान रहेगा। और ड्रेनेज पर ध्यान रहेगा कि मेरे घर का पानी दूसरे के घर के पानी में ना जाए, दूसरे के घर का पानी तीसरे के घर, क्योंकि आप पहाड़ में पानी फेंक रहे हो, यानी कि अपनी बिल्डिंग के नीचे पानी फेंक रहे हो, उन जो पिलर है उनको खोखला कर रहे हो, ये कारण भी रहा है। पर सुखू साहब, जो बार बार ये बात होती है खासतौर से पहाड़ी राज्यों के लिए कि जिस तरीके से अब पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी हो रहा है, मौसम बदल रहा है, उसके साथ साथ जो एक डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, चाहे कई सारी परियोजनाएं हों, रोड्स का भी क्या एक बड़ा इंपैक्ट हो रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी सड़कें अभी बनी हैं, उसके कारण क्या पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है? मैं कई बार पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सड़कें बनने से ऐसा, हमारे यहाँ तो 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है, पंचायतों में सड़क बनी है। पंचायतों में अगर 10 किलोमीटर सड़क बनी है तो जो लैंडस्लाइड है वो कई जगह 25 मीटर में, कई जगह 100 मीटर में, कई जगह 30 मीटर में, पूरी नहीं है। जो 4 लेन बन रहे हैं वो सिर्फ 2 ही बन रहे हैं। एक बन रहा है कीरतपुर मनाली जो बनकर तैयार हुआ, उसमें नुकसान नहीं हुआ है, उसमें लैंडस्लाइड जो है कुछ जगह पर वो खुला है हमारा। एक हमारी सोलन से जो परमाणु वाला है उसकी जो जिसने भी बनाया उसकी इंजीनियरिंग वर्क मेरे को समझ नहीं आया कि पुराने रोड को ही चौड़ा करके 4 लेन बना दी। हमें टर्निंग पर जाना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने जब वो समर कैपिटल शिमला थी तो कालका से शिमला की रेलवे लाइन में 103 टनल बनाई थी। क्यों बनाई थी उन्होंने? इसलिए बनाई थी कहा कि पहाड़ बचे रहे, और जब पहाड़ जब कटता है तो वो 4 से 6 साल सेटल होने में लगता है। लैंडस्लाइड पहले भी होते आए, हम तो जीवन से शिमला में ही रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पहले, पर इस बार लैंडस्लाइड ज्यादा इसलिए हुए कि तेज बारिश रही। क्लाइमेट चेंज का भी असर है। स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां बारिश होगी। अगर स्पीति में 1 दिन और 2 दिन बारिश हो तो पूरा स्पीति तो रेत का टीला है, चाइना बॉर्डर के रेत का टीला है वो। लाहौल स्पीति, गिनौर सब चाइना बॉर्डर के साथ लगते हैं। इसमें अगर 2 दिन ज्यादा बारिश होगी तो पूरा वो चीज बह जाएगी। तो इस चीजों को साइंटिफिक तरीके से भी सोचने की जरूरत है, और जो प्रैक्टिकल अनुभव है उससे भी सीखने की जरूरत है कि जो हमारे यहाँ के इंजीनियर है और हमारे जो स्टेटा के हिसाब से डिजाइनिंग नहीं कर देते, उस ढंग से हमें आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। सर, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, काफी नुकसान हुआ है, कितना आपका एस्टिमेट है? इकोनॉमिक लॉस कितना स्टेट को हुआ है? आप अभी 8 महीने से ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी आपदा है आपके राज्य के लिए, और केंद्र सरकार से आपको क्या उम्मीद है और कितनी मदद मिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेजी है। केंद्र सरकार की केंद्रीय टीम के जो पैमाने हैं, मैं वो भी कहना चाहूंगा कि वो हिल स्टेट्स के में लागू नहीं होते, प्लेन के संदर्भ में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट्स में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। जब अब सड़कों का मुझे अभी पता लगा उनके रिलीव मैनुअल से, तो 1.25 लाख रुपया मिलता है, उससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि टेम्परेरी हम 1 महीने के अंदर सब सड़कों को जोड़ देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी पानी की योजनाएं भी है, हमारी सिंचाई की योजनाएं भी है। हमने 48 घंटे में मनाली में, जैसे में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को टेम्परेरी बिजली प्रोवाइड कर दी थी, सड़कें प्रोवाइड कर दी थी, और पीने के पानी की योजना दे दी थी। तो ये सब चीजों को हम करेंगे, लेकिन 1 साल अच्छा स्ट्रक्चर बनने में लगेगा, और उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। और अंतरिम राहत की पहली किस्त का इंतजार भारत सरकार से हमें है। All right, Mr. Chief Minister, thank you for speaking to us, giving us the time, and trying to understand, better understanding for our viewers of what is happening, what is the state government doing. But I want to now shift focus, ladies and gentlemen, while you keep Himachal Pradesh in your thoughts, about one very important story which has taken place in fact, it happened
yesterday, one big development in the new violence that happened a fortnight back in Haryana. This man who you see on your screen, in fact on the right hand side of your screen, his name is Bittu Bajrangi. He has been arrested by the police in Haryana. But where is the other hate monger, Monu Manesa? Why is he being shielded? That is the question that we'll raise. But before I do that, let me tell you a bit more about Bittu Bajrangi, the man who goes around the name of Bittu Bajrangi, who has been arrested. He's a self-styled cow vigilante and hate monger, Bittu Bajrangi. He was arrested after a dramatic chase on foot by the police in Faridabad on Tuesday. Today, this man was produced in the court and sent to one-day police remand. His arrest was made in connection of communal violence that took place in Nuh, Gurgaon and some other places of Haryana about 2 weeks back, fortnight back. This man, who is used to make outrageous claims in the videos which go viral on social media, ran in fear when he saw the police. Before I tell you more about this man, let me show you, ladies and gentlemen, the CCTV footage of how this man was nabbed. Just take a look at this CCTV footage on your screens. Bittu Bajrangi, he is allegedly a Bajrang Dal member. I will tell you more about that as well. Now just take a look how the policemen had to nab him. All policemen in plain clothes, also carrying guns and other weapons. They went to his house. When he saw the police approaching him, he ran. And then the police had to in fact give him a chase, and then he was arrested from his residence in Faridabad, Haryana. Serious charges, ladies and gentlemen, have been put against him. Let me first very quickly tell you about about who this man is. But before I do that, the VHP, the Vishwa Hindu Parishad, has distanced itself from Bittu Bajrangi today, terming his hate speech that went viral as inappropriate. Suddenly, he is persona non grata for the VHP. Till now, he used to say that he is a member of the Bajrang Dal, of the VHP and so forth. And till then, nobody was speaking from the VHP. Now, after arrest, suddenly they have realized he is not part of their, at least, group. So, who is this man? Let me very quickly tell you. Who is this person called Bittu Bajrangi? Bittu Bajrangi, ladies and gentlemen, is a notorious cow vigilante from Faridabad. He is the head of Faridabad Gaur Rakshak Bajrang Force vigilante group, but somehow found some sort of a sanction as far as the state is concerned. He is accused of stoking violence in Nuh. Bittu Bajrangi was present at the Bajrang Dal Yatra in Nuh when the violence took place. He posted inflammatory videos ahead of the Yatra and is the first prominent arrest as far as the Nuh violence is concerned, though many people have been arrested. He was earlier arrested on August 4th but was granted bail. Now, Bittu has been remanded to one-day police custody, as I told you, ladies and gentlemen. So, let me explain in detail what is his connection to the violence that took place as far as Nuh is concerned. Now, Bittu Bajrangi was linked to the clashes that broke out in Haryana's Nuh on 31st of July. An FIR was registered against him for posting threatening videos and creating religious, frenzy, enmity. The video in mention shows this man. This is the video in which he is speaking. He is wearing the saffron attire with the songs which are playing with threatening lyrics in the background. Besides the provocative video posted on social media, the police have also said that Bajrangi and his associates wielded illegal weapons during the VHP procession. He was seen by officials brandishing weapons in air, and when the authorities confiscated the weapons, he snatched those weapons from the police on that very day. ASP Usha Kundu's complaint against Bajrangi, and she is the officer in Haryana Police, stated on July 31st, during my duties related to maintaining law and order for the Jal Abhishek Yatra, around 12:30 p.m., 300 meters away from Nala temple,
I encountered a group of 15 to 20 individuals going towards the temple. We had asked people not to carry weapons during the yatra. And during this peace committee meeting, this was reiterated by the organizers as well. Some of them were carrying swords and trident-like weapons. With the assistance of my staff, I managed to prevent them from using these weapons and causing harm. One individual, and she specifically names him, Bittu Bajrangi, identified through social media along with his associates, attempted to snatch these weapons from my fellow police officers and me. This is what the complaint said. Finally, at least, the Haryana police has acted and arrested this man. But there is one question still remaining. What about the other hate speech monger, Monu Manesa, who also is a self-styled cow vigilante? He's still absconding. Remember, he was charged with murder of 2 people. His name is in the conspiracy of murdering 2 people from Rajasthan. So, Bittu Bajrangi, he has been arrested. What about Monu Manesa is the big question, ladies and gentlemen. And that is what we are asking at this moment. Look at his history. This man, Monu Manesa, which is playing on your screens at this moment. Monu Manesa, he's been accused of attempt to murder, a fraud. There are cases against him. Videos of Monu Manesa have gone viral all across. Cases of under Arms Act have been registered against him in Haryana. He was also one of the men who made provocating videos, threatening videos. And at this moment, he continues to be on the run. The police in Haryana is not able to find him. But he is openly releasing videos, supporting people in shows like Big Boss, and still is away from the long arm of the law. The question is, iska number kab aayega? That's all the time that I have in this edition of Breaking Views, ladies and gentlemen. Thank you so much for tuning in. News and updates continue on NDTV. Good night.